welcome to the first episode from the Nepal series. Well, इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ अलग करती हूँ, तो आपको नेपाल जरूर दिखेगा इस वीडियो में, लेकिन here and there in bits and pieces, because I wanted to do this first video to try and explain to you some very important things that as an Indian, if you want to travel to Nepal, तो आप कैसे travel कर सकते हो. So this video was going to be a guide into basically everything in terms of how do you get to Nepal, where is Nepal, currency क्या है, budget क्या होगा, वीजा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. सो बेसिकली लाइक अ थरो गाइड फॉर एन इंडियन हु वांट्स टू ट्रैवल टू नेपाल बट डजंट नो हाउ. ओके, हेलो फ्रॉम दिस अमेजिंग लोकेशन. और बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो, क्योंकि मैं इस अमेजिंग लोकेशन में बैठ के कुछ काम कर रही थी, आई थॉट कि पहले मैं आई विल एड्रेस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम ऑलवेज आस्क्ड इन माय डीएम्स, एंड दैट इज़ कि हाउ आई एडिट माय वीडियोस. तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम प्रीटी मच ऑन द गो एंड आई एम एडिटिंग माई वीडियो. तो मैंने सोचा कि अभी बैठे बैठे मैं कर ही रही हूँ तो आपको बता भी दूँ. तो एडिटिंग मैंने पहले भी कहा है कि एक ऐसी चीज़ है विच आई हैव सेल्फ लर्नड, मैंने किसी से सीखी नहीं है. आई यूज़ एडोब प्रीमियर प्रो टू एडिट माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, जो आप देखते हो हर रोज़. तो यू नो, यूजिंग एडोब प्रीमियर प्रो ऑब्वियसली एंड एडिटिंग एज सच इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. मतलब ये कोई ईजी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट आप सीख सकते हो और यू कैन मास्टर एट. यू नो, इट्स समथिंग विच कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो मेरे लिए भी ऐसा ही था. आई हैड टू कीप प्रैक्टिसिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन विद अ लॉट ऑफ edits in place. और फिर जब I was confident enough, I put out a video. So basically Adobe Premiere Pro मैंने कहाँ से सीखा? There's an online learning community called SkillShare, जिस पे आप basically कोई भी क्लास ले सकते हो. Whether it's gardening, whether it's photography, painting, anything to do with science, web development, anything under the sun, आप उसमें से कोई भी क्लासेस ले सकते हो और आप सीख सकते हो. तो मैंने एडिटिंग का क्लास लिया था वहाँ पे, एंड देयर इज़ अ क्लास विच इज़ कॉल्ड एज एडोब प्रीमियर प्रो सीसी, जिस पे मैंने सीखा हाउ टू डू एडिटिंग. तो कुछ बेसिक्स होते हैं एडिटिंग के जिसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट पहले होता है. सो दैट्स वेयर आई लर्नड इट फ्रॉम. आई पिक्ड अप माई स्किल्स एंड देन आई केप्ट एडिटिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू काइंड ऑफ मास्टर दोज स्किल्स. तो अगर घर बैठे बैठे इंडस्ट्री लीडर्स से सीखने मिले, देयर इज नथिंग लाइक इट, राइट? सो ऑन स्किलशेयर दैट्स व्हाट यू गेट टू डू. आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है. तो एक अडोब सर्टिफाइड ट्रेनर है जिनका नाम है डैनियल स्कॉट. आई टुक द क्लासेस फ्रॉम हिम ऑनलाइन, और इसमें टोटल 139 क्लासेस थे, जिसमें से मैंने पूरे तो नहीं कंप्लीट किए, बट आई लर्न टू अ पॉइंट जहाँ पे मुझे बेसिक्स समझ में आ गए, एंड देन आई वॉज एबल टू टेक ऑन एडिटिंग बाय माई सेल्फ. ओके, एंड गेस व्हाट द बेस्ट पार्ट इज अबाउट द कॉस्ट. आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि अगर आप इतने सारे क्लासेस ले रहे हो वगैरह, तो यू विल हैव टू पे लाइक अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट. तो लेट मी क्लियर दैट आउट एज वेल. द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस ले सकते हो. तो बेसिकली ऐसा नहीं कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन फ़ी पे किया तो आप बस एक ही क्लास ले सकते हो. आप any number of classes ले सकते हो as many time as you want to, and the best thing is that their annual subscription fee is less than rupees 1800, which makes it less than rupees 150 a month. इससे तो ज़्यादा, मतलब लिटरली पैसा मेरे कॉफ़ी में जाता है. So I think this is an amazing way to learn just being at home. Okay, so hang on, let me quickly tell you what is the second class I took with Skillshare, and that is how to fly a drone. तो एक क्लास है जिसका नाम है DJI Drones, How to Become an Ultimate Pilot by this guy called as Alex Schulman. तो मुझे लगा कि मेरा जो कैमरा फुटेज है उसको थोड़ा और एम्प अप करने के लिए ड्रोन सीखना वुड बी लाइक एन ग्रेट एडिशन टू माई वर्क. तो इसलिए आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक दिस क्लास. सो इसमें टोटल 51 क्लासेस है, जिसमें मुझे यही नहीं सीखने मिला कि ड्रोन को कैसे उड़ाते हैं, विच इज़ द बेसिक्स, बट आई ऑल्सो गॉट टू लर्न सम रियली कूल टैक्टिक्स अबाउट हाउ यू नो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स यू कैन टेक एंड सो ऑन. सो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट एडिशन फॉर मी. जो आपने इस वीडियो में थोड़े ड्रोन शॉट्स या फिर बहुत सारे मेरे अदर वीडियोज़ में भी ड्रोन शॉट्स देखे होंगे जहाँ पे मैंने शूट किया है. ऑफकोर्स इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. जब आप एक्चुअली ऑन द फील्ड हो और उड़ा रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम लर्निंग इन थियोरी. बट जो भी बेसिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे सीखनी थी, एवरीथिंग वाज लर्नड राइट फ्रॉम here. Okay, so I have a custom link in the description for you guys, जिसमें जो first 1000 viewers होंगे, if you go and click on that link, then you will get a 1 month का free trial to go and learn any class that you want to from Skillshare. So what's the wait for? Quickly go, click on that link and get learning now. ऑलराइट, तो नेपाल एशिया में एक कंट्री है जो तिब्बत और इंडिया को लग के है. तो यस, नेपाल इंडिया में नहीं है. सो ट्रैवलिंग टू नेपाल एज एन इंडियन फॉर यू विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रैवल.
नेपाल पहुंचने के लिए नेपाल का जो काठमांडू है विच इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, यहाँ पे इनका एक लोकल एयरपोर्ट है एंड फ्लाइंग इन टू नेपाल इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम एनी इंडियन सिटी. मुंबई से मैंने फ्लाई किया था. आई वेंट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड देन फ्रॉम दिल्ली आई हैड अ 1.5 hour flight to Nepal to Kathmandu itself. So flying is the best option if you're looking to get to Nepal quickly. लेकिन having said that, you can also take a bus or you can also take a train and you can even self drive and go. अगर आपको एक बहुत ही long drive करने का शौक है then you can do that. It will take you 27 hours. Say for example अगर आप दिल्ली या फिर अगर आप मुंबई से गए तो somewhere around 27 to 29 hours is what it will take you to get to Nepal. So if you are somebody जिसको सफर enjoy करना है destination से ज्यादा then that is also an option for you. But मेरी मानो तो फ्लाइट लेके जाओ बिकॉज नेपाल इतनी खूबसूरत जगह है, वहां पे पहुंच के करने के लिए बहुत कुछ है. तो टेकिंग अ फ्लाइट टू काठमांडू डायरेक्टली वुड बी अ गुड ऑप्शन. एंड द फ्लाइट रेट्स रियली वेरी फ्रॉम अगेन पीक सीजन हो या ना हो. फ्लाइट्स टू काठमांडू आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. यू कैन सी द फ्लाइट रेट्स ओवर हियर. दीज आर द टेंटेटिव प्राइसेस मंथ वाइज. Another thing I wanted to address is the COVID protocol. Now that we're living in a post-COVID era, I think this is very important to address. तो नेपाल में as such as of now, when I visited, it was May 2022. अभी के लिए तो वहाँ पे कोई strict COVID protocols नहीं है. Yes, you need to obviously have your double vaccination certificate handy at all times. ये immigration पे एक बार ही check करेंगे. Also your boarding, port of boarding airport जो होगा, मेरा मुंबई था तो मुंबई में चेक किया था. I went to Delhi, दिल्ली में भी चेक किया था. तो आपका जो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये जरूर अपने साथ कैरी करना. अगर आपने अब तक 2 वैक्सीनेशन नहीं लिए, आई डोंट नो व्हाट यू बीन डूइंग. इफ यू टेकन सिंगल वैक्सीनेशन और नो वैक्सीन एट ऑल देन यू विल बी हैविंग टू कैरी अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जो 48 आवर्स से लेट ना हो. बट आई एम रियली अज्यूमिंग एंड होपिंग दैट ऑल ऑफ यू सो फार हैव टेकन बोथ योर वैक्सीनेशंस. तो आपका जो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है बस इसे साथ में रखना. इसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स दैट्स रिक्वायर्ड. इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड पर्सनल सेफ्टी, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कैरी अ फेस मास्क विथ यू. कंपल्सरी नहीं है लगा के रखना, बट आई सजेस्ट कि इट्स ऑलवेज गुड कि आप जब एक क्राउडेड प्लेस में जाते हो जैसे कि कोई टेम्पल हो गया या ऐसे कोई नई जगह में, जस्ट कीप योर मास्क ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स इफ यू कैन. इट्स जस्ट फॉर योर पर्सनल सेफ्टी. The best time to visit Nepal would be somewhere around winter. जब विंटर शुरू होने वाली हो तभी नेपाल में बहुत ज्यादा ठंड होती है ड्यूरिंग लाइक स्टार्क विंटर इन प्रॉपर December, January. So I suggest कि you go in the months of October, November when winter is just begun, it has just set in and the weather will be perfectly all right. So also here's what my experience is. मैं मई में गई थी and मई में usually is summers everywhere in India, right? So I expected it to be summers even in Nepal. तो मैंने एक weather check किया था जिसमें कहा था कि the summers there are much more pleasant than what I experienced in Mumbai obviously. So I was really excited about that. But when I went to Pokhara, वहाँ पे the temperatures were very very stark different. So when I wake up in the morning, it used to be like scorching hot in the morning. फिर दोपहर को around 1 o'clock it would just start raining all of a sudden, and then evening होते होते it would get very cool. So it's basically like experiencing 3 different weathers in one day in one single city itself. Also I visited Lumbini जहाँ पे it was extremely hot. Like Lumbini is extreme weathers. It's either extremely hot or it's extremely cold. And Kathmandu is pretty pleasant. It's a city, तो वहाँ पे गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है. It's quite pleasant. It's bearable. But like I said, if you pick the right months to go, which is जब winter just start होने वाली होती है, you will enjoy the most. ना ज़्यादा सर्द होगी, ना ज़्यादा गर्मी होगी, and that would be the perfect months to visit. सो इंटरनेशनल ट्रैवल होने के बावजूद आपको नेपाल जाने के लिए एज एन इंडियन वीजा की जरूरत नहीं लगेगी. तो बेसिकली ऑल यू नीड टू कैरी इज आइदर योर वोटर आईडी और योर पासपोर्ट. पासपोर्ट लेके जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इमिग्रेशन में पहुंचेंगे नेपाल में लैंड करने के बाद, तो इमिग्रेशन पे आपका जो पासपोर्ट होगा उसमें एंट्री और एग्जिट का स्टैंप लगेगा. व्हेन यू लीव नेपाल यू विल हैव एन एग्जिट स्टैंप एंड व्हेन यू आर एंटरिंग नेपाल यू विल हैव एन एंट्री स्टैंप ऑन योर पासपोर्ट. सो कैरिंग योर पासपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमिग्रेशन. बट नो, वहां पे इंडियंस के लिए वीजा लगाने की जरूरत नहीं है.
ओके ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए आप सबसे कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे लिए टू हैव लाइक एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आई एम समबडी हु कीप्स गूगलिंग एंड लुकिंग फॉर information and looking for places when I'm at a destination. So for me to have a steady mobile network and internet working both is very 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 important. So here are two things that you can do. Being an international travel, obviously आप जो आपका current network provider होगा उसमें आप आपका international roaming भी on करवा सकते हो if that's something that you want to do. I didn't want to do that, तो मैंने वहाँ नेपाल पे लैंड करके ही एक नेपाल का जो लोकल सिम होता है वो खरीदा. तो once you like got your baggage and stuff from the Nepal airport, निकलते ही एयरपोर्ट को एग्जिट करने के पहले वहां पे कियोस्क मिलेंगे ऑफ देयर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स. तो एनसेल करके एक उनका लोकल नेटवर्क है जिसका कियोस्क मुझे सबसे पहले दिखा. तो आई क्विकली वेंट ओवर देयर टू बाय अ सिम कार्ड फॉर माई सेल्फ. ऑल्सो इनकी सिम कार्ड के अलग अलग प्लान है एज यू कैन सी हियर. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर जस्ट बाइंग अ सिम कार्ड देन इट विल कॉस्ट यू 300 नेपाली रुपीज. बट इफ यू वांट टू गेट डेटा एक्टिवेटेड तो ये सारे अलग अलग प्लान है जस्ट लाइक यू कैन सी. तो मैंने 7 days 700 नेपाली रुपीज वाला प्लान एक्टिवेट करवाया था. इट वर्क प्रीटी वेल. I got 7 GB data for 7 days. ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप सिम कार्ड वहां से खरीदने वाले हो जस्ट लाइक मी, तो आपको आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा. उनका एक फॉर्म फिल करना होता है उस पर लगाने के लिए. आई डिडंट नो अबाउट दिस, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ. तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट साइज फोटो था नहीं तभी, तो आई हैड टू गेट इट क्लिप्ड. तो वो वहां से उनके मोबाइल से वो क्लिक कर लेंगे एंड दे विल डू इट, बट दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा 50 नेपाली रुपीज फॉर दैट. सो डू बेयर दैट इन माइंड. जस्ट कैरी अ पासपोर्ट साइज फोटो विथ यू एनी हाउ, क्योंकि you'll just save on some money. Alright, so that brings me to another very interesting topic कि there are some local foods that you should try in Nepal. Now आप जब किसी नए कंट्री में जाते हो या नई सिटी में जाते हो तो हर जगह का कुछ लोकल क्विजीन होता है. और नेपाल में बहुत ज़्यादा they cook like really amazing and really nice local meals. But if you are somebody who's not very experimental, then that can be a challenge for you. So which is why I thought कि मैं इस सेक्शन को भी ऐड करती हूँ इस वीडियो में to help you guys understand कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए. तो जो आप when you come back to your home city आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ बहुत ही लोकल नेपाली डिशेस भी ट्राई की है. So here's a list of some of those items. Nepal has a variety of local dishes to try from. The first one has to be a Nepali thali. Every region has a different one and it's a must try. Of course, Nepal में locally बने momos की बात तो कुछ और ही होती है. Try their chicken momos. Tungma is a locally homebred beer made with millet. Hot water is poured over this and you can sip it after 5 minutes of brewing. It tastes like wine and beer were mixed together. Also, don't forget to try their local beer, the Gorkha beer. Or try the Newari cuisine. Newari is a subcaste in Nepal and इसका खाना कुछ अलग ही होता है. I tried the full meal. Alright, so accommodations के लिए there are so many options over there. आप अगर एक backpacker जैसे travel कर रहे हो तो there are hostels, there are good hotels and so on in basically every city of Nepal. तो मैंने 3 cities visit किए थे. I visited Lumbini, I went to Pokhara and then I went to Kathmandu. जहाँ जहाँ मैं गई थी at least मैं आपको मेरे होटल दिखा सकती हूँ. So just in case you also are visiting the same place, तो आपको अगर मेरी होटल देखनी है before you go, तो here's a quick look. लुम्बिनी में मेरे होटल का नाम था बुद्धा माया होटल बाय KGH and this is what it looked like. It was a very comfortable hotel, really nice. The breakfast was really good and it's a large huge property. तो आप सुबह उठ के यहाँ पे नीचे वॉक वगैरह के लिए भी जा सकते हो. It's a nice place. The hotel in Pokhara that I stayed at was called as the Iceland Hotel. इस होटल की खासियत ये है कि इसका जो लोकेशन है काफी एप्ट है. तो पोखरा में ना बहुत ही बाली टाइप का, बहुत ही बैंकॉक की स्ट्रीट टाइप का वाइब आएगा अगर आप बाली या बैंकॉक गए हो. अगर नहीं तो इसे देख लो. ये जो स्ट्रीट आपको दिख रहा है, इट्स लाइक अ बसलिंग स्ट्रीट full of like restaurants and clubs where you can like bar hop and stuff like that. So that is really cool. और मेरा ये जो होटल था, होटल Iceland, was right like just 2 minutes walk from the street. So the location is the USP of this hotel. And then the last one where I stayed was Hotel Himalayan Suite, which is in Kathmandu. इसका location थोड़ा सा tricky है. It's a little inside, मतलब गाड़ी घुमाने के लिए it's a little difficult because थोड़ा अंदर है. But again, it's just a little bit of a walk from the main market street, जो थामिल street है काठमांडू का. वहाँ से it's a small walk, or you can even take like a local tuk-tuk or something, or if you have a car that you've rented out, you can take that along and go. So yeah, that's pretty much it for where you can stay in Nepal.
Okay, and also there are few experiences that I feel you should not miss when you are in Nepal. कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे ट्राई करने नहीं मिली, but I wish कि मुझे ट्राई करने मिलती. तो अब मैं आपको तो सजेशन दे ही सकती हूँ. There is something called as the Everest फ्लाइंग सेशन. तो बेसिकली वहां पे आप हेलीकॉप्टर रेंट कर सकते हो या फिर आप एक छोटा सा प्राइवेट जेट जो होता है इसे रेंट कर सकते हो एंड यू कैन टेक राइड ओवर माउंट एवरेस्ट. 1 घंटे का राइड होता है. सो आई थिंक दैट्स रियली वर्थ द मनी. नाउ द ओनली चैलेंज इज कि अगर आप इस हेलीकॉप्टर को रेंट कर रहे हो सो दैट वुड बी 61,000 नेपालीज रुपीज पर पर्सन. 4 लाख का वो हेलीकॉप्टर होता है. It's obvious why, because the helicopter is an expensive mode of transport. It is an experience, but again, it's very expensive. So you can skip that if you want to, but do not get disheartened. मेरे पास एक और option है. If you're not taking the helicopter, what you can do is you can take a private jet, जो एक छोटा सा private plane होता है, which can accommodate about 8 to 12 people depending. Now this is the one that you don't get to go private, just like the helicopter. इसमें आप share करते हो इस छोटे से private jet को with other people as well who want to do the tour like you, and this will cost you just 8,000 Nepalese rupees per person. So इसके लिए भी आपको आपका पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा. यू हैव टू गो टू काठमांडू एयरपोर्ट फ्रॉम काठमांडू इटसेल्फ, जहां आपकी होटल होगी, एंड दैट्स वेयर यू कैन गेट टू बोर्ड दिस फ्लाइट फ्रॉम एंड यू कैन गेट द अमेजिंग व्यूज ऑफ माउंट एवरेस्ट. आई फील कि नेपाल जाके माउंट एवरेस्ट को एक बार देख पाना, इवन दो फ्रॉम एन एरियल व्यू, इज लाइक अ बिग डील. सो या यू कैन ट्राई डूइंग दैट. Another experience you guys can do is if you are staying going to Chitwan. Chitwan जो है is another city of Nepal. मैं यहाँ पे नहीं गई थी, but Chitwan में आप जा सकते हो. It's a forest place. तो यहाँ पे forest treks, forest walks वगैरह बहुत होते हैं. So you can try doing that. All of this, of course, at an additional cost, but I'm just giving you a list of experiences which are very unique to this place, and I think that you can definitely give it a try. Also, other than this, you can do like a good temple run because Nepal is known as the city of temples, and यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग temples है. पशुपतिनाथ being the main temple of all of them. तो आप एक temple walk ले सकते हो. You can take out an entire day from morning to night, जहाँ पे आप एक से दूसरे, तीसरे, चौथे temples visit कर रहे हो. The architecture is very, very different. The beliefs that these people have are very different. So sit down in a temple, talk to some of the locals, try to understand, you know, what they do and why they do it. It's very intriguing and it's very mind-opening. Other than that, you can also, there are a number of Nepalese massage centers which you can also go to. If you're somebody who's there for a retreat, somebody who's looking to just wind down, then you can definitely go for a Nepalese massage session as well. Other than that, the people of Nepal are really warm from what I experienced. वहाँ पे सब लोगों को हिंदी समझती है और सब लोगों को इंग्लिश भी समझती है. So communication is not difficult. आप लोगों से बहुत comfortably, you know, communicate कर पाओगे. अगर आप solo भी जा रहे हो या you know, if you wanna like try and figure out and find places आसपास में, they're very helpful. They're very sweet and they love Indians. They get a lot of Indian tourists, so they love Indians. They know Bollywood really well. So that is pretty much it for this episode. I've tried and fit in everything that I could in terms of, you know, how you can travel to Nepal as an Indian and what are some of the important things that you need to keep in mind. Other than that, if there is anything, that will be addressed in video 2 and video 3. So stay tuned. In the second video and in the third video, I will be actually taking you from my home city, which is Mumbai, all the way to Nepal. We will be touring Nepal. जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है, the places of visit and so on, ये सब आपको बहुत ही डिटेल में उन वीडियोस में देखने मिलेगी. So be sure to stay tuned and check that out. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, if you're a new person who's watching my videos, then Talkin Travel, this is my channel. Please do subscribe to the channel if you like the videos, because I will keep dishing out more and more guided videos and more things from my trips and sharing my itineraries with you guys so that you can travel better and more efficiently. Anyway, I will see you guys in the second video. For now, bye.